completed the EOI. So if you haven't received the EOI yet, I would ask you to send an email as for EOI inquiry on IPA fund at pakistanipa.com. So when you fill it up, and it gets submitted, you will get the RFA form, RFA guidelines along with the annexures. During our interaction today, I'll be sharing it with you the information from the request for application form. कोई इसके अलावा कोई different information नहीं होगी. So the information is coming up from the RFA, and we will be sharing it with you the annexures, how to fill up your application. So although we have provided a lot of information in the RFA, and some of the important ones might skip when you just read that out, तो ये जो information session है, orientation session, इससे ये help हो जाती है कि हम आपको थोड़ी highlight कर देते हैं ऐसी information that could be of more use to you when you're working on your grant application. It's 11:05 now. I think we can just begin, or others can join later on. So thank you once again for joining in for the pre-application orientation session. My name is Usman Kirmani. I am leading the IPF fund component of USAID investment promotion activity. I'm also the acting deputy chief of party for the IPF for the USAID investment promotion activity. Before I go into the details of it, the session and the meeting and the overall information that I'm going to give it to you, and the introduction about USAID investment promotion activity, I wish to share it with you that we'll have interaction. We'll have interactive question and answer session. If you have questions, you may write those down within the chat box. I'll ask my team member Fahim to help me out with the questions in the end. And in the end, we will have a 30 minutes time allocated towards question and answer session. And even if you missed on asking any important question, or when you work on your grant application, you get to know an important question pops up, just feel free to write it down on the IPF fund at pakistanipa.com. Just give us the time for approximately 24 to 48 hours to respond it to you, because we have got a lot of engagement on this email address. Also, I wish to share it with you कि एक important fact है that we have learned from a previous grants programming challenge fund through small and medium enterprise activity. Through that fund, we had provided close to 140 grants all over Pakistan with an accumulative worth of 7.5 million US dollar. So in the last year of that program, what we have learned that 70% of our grantees were the ones who had already participated in one of these orientation events. So although the information, as I just shared, would be an extract of the request for application document that you would have already received. If you haven't received that yet, send out the EOI so that you could get the RFA document as soon as possible. So I wish to share with you the introduction of USAID investment promotion activity. It's a 5 years project that is being funded by USAID to Chemonics International as a pass-through entity. And with a prime objective to increase the international investment climate within Pakistan, and also to strengthen the US-Pakistan bilateral trade. So within my webinar, I'll be stressing upon these two important objectives of USAID IPA. One is the to mobilize private sector investment so that we could increase the FDI or international investment. And the other one is to increase US-Pakistan bilateral trade.
We work with the government, we work with the enabling authorities, for instance, BOI, with State Bank, with SCCP, with international donor community as well, with investors through a business enabling environment. And we also assess and find out the barriers of US and Pakistan trade and investment opportunities through our investment promotion component. IPA fund is a grants program through that we wish to buy down the risk of a Pakistani firm who wish to expand and get either an FDI in the form of international funding, or if they have got some linkages within the US market and they want these funds to be utilized to enhance those linkages and increase US-Pakistan bilateral trade. To give you an overview on IPA fund, it's the total size of the IPA fund is 3.3 million US dollar. As I shared it with you, it's a 5 years program. We'll have multiple rounds of solicitation. We have got 4 priority sectors. That includes information, communication, and technology. That's a diverse sector. We see it as a sector itself and also as an enabling environment, as an enabling sector, as an enabling cross-cutting theme for any other sector. We have agriculture, technology, and business processing. We do have manufacturing. Manufacturing is again a wide sector. It includes textile, it includes light engineering, and much more businesses. We also have tourism and hospitality. It is perhaps one of the sectors that has been hit the most during the COVID crisis. So we have got special focus on tourism and hospitality as well. Aside from these 4 sectors, since we are not, although these are our priority sectors, but we are not pretty much fixated on it. Even if an organization that is working into any different sector, for instance, in gems and jewelry or in cosmetics, or if there is a woman-led company who wish to align their proposed objective with either the FDI grant or the US-Pakistan bilateral trade objective that we have. So those are also eligible to apply. So if I am a potential grant applicant, what I would see and search and find it out, what are the key indicators, what are the key targets of that funding agency or of that institutional donor, in this case USAID. So we need to find it out, because if we align our expected results with those key targets, we will have a better traction towards those targets, and we will have a better chances to win the grant as well. So in case of IPA, we have set ourselves a target that we will be increasing US-Pakistan bilateral trade to 40 million US dollar. So for the 5 years of project, what we aim is through the grants program, the individual trade and the combined trade of all of the grantees would eventually have an impact on this 40 million incremental sales target. So this is trade. It includes both imports and exports. Either it could be the exports from the Pakistani market into the US market, or we are opening up Pakistani market for the US-based merchandise or services. Likewise, for the FDI, what we have set ourselves a target is that we will mobilize 25 million US dollar worth of private sector investment. So this private sector investment includes your own equity. This includes third-party commitments with you or any other bank maybe. So we have an overall target
to achieve this 25 million worth of PSI so that we could increase 75 million worth of international investment in the form of FDI. अच्छा, यहाँ important है कि मैं आपको बताता चलूं कि FDI is not just focused on the US market. यानी जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ यूएस बेस्ड इन्वेस्टर से आ रही हो. इट कुड बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट for the US-Pakistan bilateral trade, as the name indicates, we are just focused towards the US or Pakistani market. Speaking of FDI, as we know, to raise international investments, you need to engage with the potential investors, which could be in the form of meetings, right? So you engage with them, you set up times with them so that you get into some kind of mutual benefit settings. You pitch your offering, you get their investments on board, and this how you, you will have a contribution towards the 2,000 meetings that we are expecting. So let me share it with you, the funding streams that we have. We have got 3 funding streams right now. Although we have advertised for 2 now, but we have got 3. I'll share it with you, the third one as well. लेकिन ये है कि for this grant solicitation, we are just focused on FDI grants and US-Pakistan bilateral trade grants. For FDI grants, the total worth of, or the total ticket size of a grant should not exceed 20 million PKR. 2 करोड़ रुपए पाकिस्तानी तक की आपको ग्रांट फंडिंग मिल सकती है. That goes for the FDI and for the US-Pakistan trade as well. So for FDI grants, what we wish to achieve is to act as a catalyst to expedite the potential matchmaking of a Pakistani firm. अगर ये मैं बिल्कुल एक सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूं तो with an example, for instance, if you are an IT business, आपकी एक ICT firm है, and you wish to scale up your business so that you could get the international investment on board. So अगर आपका एक IT का business है and you are in talks with an international investor, let's say आप Microsoft के साथ बातचीत में हैं, and Microsoft asks you for a prerequisite or a condition कि ठीक है, हमें आपकी services तो पसंद है, लेकिन आपने अपनी organization को एक certain scale पे लेके जाना है, कि जिसके बाद we will be able to invest in your business. For instance, it may require कि आप अभी एक specific region में हैं और आपकी implementation all over पाकिस्तान में हो जाए या मल्टीपल सिटीज में हो जाए, या अगर आपके इन्वेस्टर की डिमांड है कि आप अपने आप को स्केल ऐसे करें कि जिसमें कोई फर्स्ट करें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लेकर आनी है, कोई मशीन की कोई ज़रूरत है, या आपने कोई ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट MIS या कोई ERP सिस्टम बनाना है. So let's say as a prerequisite to scale your productivity and your outreach, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट फॉर $500,000 या 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. अब ये इन्वेस्टमेंट ये आपका रिस्क है. In order to get closer to the investment that you are seeking, let's say वो आपको $2 million की commitment कहते हैं on this condition. So what we want to achieve through the grant funding is to buy down your risk of this 5 crore through the grant fund, right? तो अभी अगर ये 5 करोड़ रुपए की आपके पास overall size of investment है जो आप जिसके through ये international investment in the form of FDI would get materialized, हम इसमें up to 20 million यानी कि 2 करोड़ रुपए तक की आपको ग्रांट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. और ये ग्रांट अपॉर्चुनिटी जो है ये आप एक्सपेडाइट करेगी आपकी बाकी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को, which could be in the form of bank, which could be in the form of other investment, which could be in the form of your own savings or your own equity. I wish to clarify over here कि जितनी भी grants program होते हैं,
these grants program are not meant or designed to be 100% access to finance solution to all of your investment problems. But these act as a catalyst. ये आपको मोटिवेट करते हैं, कि आपको किक स्टार्टर देते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन देते हैं, so that you can mobilize, you can work around your investor. आप एक्सपेडाइट करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को या किसी बैंक से, जिसकी वजह से आप उस लेवल ऑफ स्केल पे पहुंच जाए कि आपकी जो टॉक्स हो रही हैं विद द इन्वेस्टर, इट गेट्स मैच्योर्ड. So as I mentioned, special focus on FDI grants is to catalyze potential matchmaking of a Pakistani firm comparatively. So अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर के साथ टॉक्स में है, या आप समझते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं, और आपकी कैपेसिटी इतनी है कि जो इन्वेस्टमेंट की एपेटाइट रखती हो, और उसके लिए कोई स्केल करने के लिए, क्योंकि हमें आइडिया है कि इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट विदाउट मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल पीएसआई कुड नॉट बी अचीव्ड. तो इसी वजह से हमने जो 25 मिलियन यूएस डॉलर का टारगेट रखा है टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट. सो द पीएसआई, योर कंट्रीब्यूशन and the third party contribution combined with this grant support would expedite you to achieve the FDI of that 2 million और 1 million है, जितनी भी उसकी वर्थ है. हमने कोई भी थ्रेशहोल्ड्स नहीं रखे कि इतनी एफडीआई, इतनी आपकी पीएसआई हो तो इतनी एफडीआई होनी चाहिए, या मिनिमम इतनी एफडीआई होनी चाहिए. जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं प्रपोजल्स को, आपको एक आइडिया हो जाए. इसके अलावा हम ये भी नहीं एक्सपेक्ट करते कि विद इन द स्पैन ऑफ 6 to 8 months वो जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं वो तमाम लिक्विडेट हो जाएगी और वो स्पेंट हो जाएगी पाकिस्तान में. वी एग्री कि आप इतने टाइम तक तो एक प्री रेक्विजिट्स को मीट कर रहे होंगे, अगर आप ऑलरेडी इन सम सॉर्ट ऑफ डील स्टेज में है, राइट. और उन प्री रेक्विजिट्स को फिल करेंगे, और by the time when you reach to the close out of your grant, जो कि 6 to 8 months है, उस टाइम तक you will have the deal closed. So this means कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है विद द इन्वेस्टर, दैट वुड बी इन प्लेस, जो रीइंफोर्सिंग होगा आप पे भी और उनके ऊपर भी. सो दैट वुड बी इनफ फॉर अस टू नो कि आपने एफडीआई लिवरेज कर ली भी है. एंड देन पोस्ट 2 years of the grant award, we expect you to share with us your numbers. तो these numbers actually attribute towards the overall results, और जो expected results आप हमें देते हैं, ये उसको contribute करते हैं. The other funding stream that we have open right now is US-Pakistan bilateral trade. अच्छा, before I go into the detail, क्योंकि कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, FDI के बारे में although मैंने introduction में बताया, लेकिन for the FDI grants, it's not necessary कि it needs to be from the US-based investors. It could be from any part of the world. It could be from a firm, it could be from a VC, it could be from an angel investor, but they need to have a legal setting. अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हम 2 को-फाउंडर्स हैं और एक को-फाउंडर हमारे कनाडा में बैठे हुए हैं, और वो इन्वेस्ट करते हैं बड़ा हेवीली, और बड़ी रेमिटेंस आती है पाकिस्तान में. Would that be considered as FDI? No. So that would be considered as a remittance to Pakistan maybe, or as a PSI. तो वो आपका PSI तो है, लेकिन वो आपका FDI नहीं है. हमने FDI को डिफाइन भी किया हुआ है अपने RFA में, क्योंकि इस FDI एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या FDI तब कंसिडर होगी कि जब वो आपसे डिफरेंट कोई कंपनी है जो इन्वेस्ट करना चाहती है आपकी कंपनी में, और आपके स्टेक्स में हिस्सेदार बनना चाहती है, यानी कि आपके प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर भी उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी एंगेजमेंट होगी. ठीक है जी. अच्छा जी, नाउ लेट मी शेयर इट विद यू द US पाकिस्तान ट्रेड ग्रांट. ये जो 2 मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं, these are the 2 funding streams that are open. टेक ट्रांसफर ग्रांट जो बीच वाली है, वो मैं आपके साथ आपको
Briefly I'll touch upon to it as well, लेकिन जब इसको हम जिस टाइम पे लॉन्च करेंगे we'll have separate sessions for that. US-Pakistan trade grant, as the name indicates, we have got this priority we want to scale up the trade that is already being taking place to a multiplier effect. And it could be on both ways. So since it's trade, it could be either export or imports. Either you will be exporting towards US market or your counterparts in the US, or you are opening a Pakistani market for the US-based merchandise or services. Recently हमारे कुछ stakeholders के साथ interaction हुआ जिसमें US Business Council और forums हैं. We got to know, and with BOI as well, और जो Ministry of Commerce हैं जो काफी इसको देख रही है focusly. We actually found out कि within all of the sectors we have, ICT and textile have been doing really well in terms of US-Pakistan bilateral trade. अगर आप पिछले 3 साल के अपने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी देख लें तो आपको टॉप 5 कंपनीज टेक्सटाइल से रिलेटेड मिलेंगी और देयर इज अ मेजर पोर्शन इन द यूएस market. Similarly goes to ICT as well. We see that there is a lot of business processing outsourcing जो कि काम हो रहा है from the Pakistan to US. So that also includes within the US-Pakistan bilateral trade. So if you have an existing linkage और आप उसको expand करना चाहते हैं through inclusion of any sort of assistance. अच्छा, एक और चीज वाजे करता चलूं कि these grants program are just act as an access to finance to your barrier जिसकी वजह से आप यूएस पाकिस्तान ट्रेड या एफडीआई को लेवरेज जल्दी नहीं कर पा रहे. We do not provide any sort of technical support or linkages. अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि जी हम एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं विद इन द यूएस और आप हमें किसी और यूएस की स्टेट में मुतारिफ करवा दें, कनेक्ट करवा दें उनके साथ. So we would not be acting as a source of linkages, a source of getting you linked with investors. वो आपका काम है. आपने पूरा सोल्यूशन A to Z हमें देना है. परफॉर्मेंस बेस्ड माइलस्टोन सेट करते हैं हम आपके साथ और उस बेसिस पे फिर आप बेसिकली इम्प्लीमेंट करते हैं जो आपने स्ट्रेटजी बताई जैसे वो इवेलुएट हुई. सो फॉर यूएस पाकिस्तान ट्रेड ग्रांट अगर ऑलरेडी आपके कोई लिंकेजेस हैं विद इन द यूएस मार्केट और आप समझते हैं कि आप अपने आप को स्केल कर सकते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी बताऊं, एक सक्सेस स्टोरी है हमारी चैलेंज फंड में. ऑल्दो तब हमारा फोकस यूएस पाकिस्तान ट्रेड इतना नहीं था, हम ज्यादा फोकस ग्रोथ के हवाले से थे. पंजाब बेस्ड एक टेक्सटाइल फर्म है, उन्होंने एक सैंपल, एक प्रोटोटाइप या कुछ उन्होंने एक कमोडिटी मर्चेंडाइज बनाई फॉर अ यूएस ब्रांड अंडर आर्मर. आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा. और वो उनको पसंद आया, लेकिन उन्होंने कहा कि यू लैक दिस सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, आपकी मशीन इस किस्म की नहीं है, आप आउटसोर्स कर रहे हैं या आपके पास सर्टिफिकेशंस दैट आर बीइंग कंसीडर्ड एज मेजर इम्पेडिमेंट टू द यूएस पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड ग्रांट, और कोई स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है. So they applied for these sort of support. We provided them with the grant. They got a state-of-the-art new embroidery machine और कुछ उन्होंने certifications भी ली, and now they are producing Under Armour articles for them. तो this is just an example. तो इसके थ्रू मतलब अगर आप if you have got the linkages, लेकिन आप समझते हैं कि it's just that we need to scale our production to a certain level कि जिसकी वजह से आज अगर हम किसी एक यूएस काउंटर पार्ट में काम कर रहे हैं, हमारे पास 15-20 और क्लाइंट्स खुल सकते हैं और आपके पास एफडीआई के चांसेस भी आ सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट के चांसेस आ सकते हैं. सो यू कैन अप्लाई फॉर यूएस पाकिस्तान ट्रेड ग्रांट. एंड एज आई जस्ट सेड, वी कंसिडर there would be a lot of requirement of certifications, accreditations. There are buyers
एक्रीडेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स आगे जो आपने फुलफिल करनी है, जैसे फर्स्ट करें जो लोग टेक्सटाइल में काम करते हैं, दे वुड नो कि यूएस के बड़े ब्रांड्स लाइक वॉलमार्ट, दे हैव गॉट देयर ओन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स असाइड फ्रॉम द आईएसओ जो अदर स्टैंडर्ड्स हैं, तो उनकी कॉस्ट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और वो भी आप अपने प्रपोजल में डाल सकते हैं. The third funding stream that we have is known as tech transfer grant. We haven't advertised it as yet, lekin through the tech transfer grant, what we aim is to quickly empower private sector investment to build the capacity to meet the US market standards. तो ये भी US bilateral trade की तरफ focused है. Amount of grant would be much lower than this one. लेकिन the overall implementation which would be much quicker. Also, we will be getting application on rolling basis. So when the time comes, probably in November this year, we are planning to launch tech transfers as well. अच्छा जी, I can see your engagement on the chat box, लेकिन I will leave that for the last Q&A sessions. I'll ask my team member Fahim to help me with the questions and we'll respond to all of your questions. I'm sure कि after this presentation आपके कई सारे questions fulfill हो चुके होंगे. For the overall eligibility, we have got just one eligibility that the firm needs to be legally registered in Pakistan. Although we have got some desirables as well for each of the funding stream, that is FDI and US-Pakistan trade, लेकिन the applying firm needs to be legally registered. हम इधर word firm use करते हैं to indicate a business. This could be a sole proprietor. This could be a private limited firm or SMC with SECP or any other setting, जैसे association of partners होती है. So as long as you are legally registered firm, you can apply. You can also apply as a JV, joint venture के through भी आप apply कर सकते हैं. लेकिन उसमें you will need to provide us the teaming agreement along with the application कि जिसमें one applicant should be considered as prime and all of the implementing applicants और जो आपके JV partners हैं, they also need to be registered entity in Pakistan. The total size of the award is up to 20 million. इसमें अक्सर ये देखा गया है, लोग समझते हैं कि अगर हमने फुल सीलिंग की फंड आस्क ना की तो हमारे चांसेस काफी लो हो जाएंगे, हमें ग्रांट नहीं मिलेगी क्योंकि हमने कम अमाउंट दी है. व्हाट आई वुड सजेस्ट कि बी रीजनेबल इन योर आस्क, क्योंकि अगर आप बड़े इन्फ्लेटेड किस्म की फिगर्स मांगते हैं तो जो आपकी इवैल्यूएशन है उसमें मेंबर्स, उसके अंदर मैं इवैल्यूएट नहीं कर रहा होता, लेकिन आपके जो इंडस्ट्री के लोग होते हैं जिनका एक डेमॉन्स्ट्रेटेड एक्सपीरियंस है कि उन्होंने फंडिंग रेज की हुई है, उनका एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है, उन्होंने बिजनेसेस बना के बेचे हुए हैं, एग्जिट्स किए हुए हैं. सो अगर कोई अनरीजनेबल आस्क होगी तो वो वहां पे एकदम हाईलाइट हो जाती है. सो बी रीजनेबल इन योर आस्क. द ओवरऑल ग्रांट्स पीरियड is up to 6 to 8 months. The geographic coverage is nationwide. We do not hold any sort of quota on any geographical coverages. For instance, अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये तो इस किस्म की ग्रांट्स तो लाहौर, कराची और इन जगह बड़े सिटीज में चली जाती हैं. सो आई एम प्लीज टू शेयर इट विथ यू. जैसे हमने पहले आपको बताया, प्रीवियस ग्रांट में हमारे पास केपी, दीर, स्वात, चतराल, जीबी, इन तमाम की सक्सेस स्टोरीज हैं. सो एज लॉन्ग एज योर एप्लीकेशन इज कॉम्पेटिटिव, तो कोई ऐसा कोटा नहीं है, कोई सेक्टर स्पेसिफिक कोटा नहीं है. तो सो इट्स जस्ट ऑन द इवैल्यूएशन, और जो मैं अभी आपके साथ आगे जाके शेयर करूंगा उसकी बेसिस पे. The deadline for submission of grant application is 15th of September. So as a first step, आपने जब EOI फिल किया, आपके पास रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन टेम्पलेट आया. जो EOI है उसकी डेडलाइन तो August 31st है, लेकिन for you to fill up the application form and the budget,
उसके लिए हमने मजीद आकर टाइम दिया हुआ है टिल September 15th 2022 11 p.m. sharp. We do not accept any sort of by hand or couriered grant application. We just accept the online submissions, और वो भी through the designated IPA fund at pakistanipa.com जो आपके साथ शेयर हुआ है. I just want to walk you through the grant cycle so that you could comprehend कि ये पूरा grants making process कैसे होता है. और कितना आपको आइडिया भी हो जाएगा क्या प्रोसेसेस हैं, अगर टाइम लग रहा है तो कौन सी स्टेज पे मेरी एप्लीकेशन इस टाइम पे होगी. मैं स्पेसिफिक टाइमलाइंस भी आपके साथ शेयर करूंगा. इट बिगिंस विद कॉल फॉर एप्लीकेशन जो EOI है. इस केस में वी हैड कॉल्ड फॉर एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट. We hold pre-application orientation sessions. We have holded several webinars as well. अभी भी हम जैसे एक वेबिनार में हैं. We had a tremendous engagement in Lahore, Karachi, Islamabad. We have got 2 other in-person events going on. One would be in Islamabad on 1st of September. If you wish to enroll for it or if you wish to refer it to your friends to get enrolled, आप वो भी कर सकते हैं. इसके अलावा in Peshawar, we are also holding such kind of in-person event on next Tuesday. अच्छा जी, इसके बाद since when you're done with the orientation sessions as well, we give time, and there's 6 weeks of time for application submission. You work on your grant application template. I'll share the template with you. कुछ tips and tricks भी आपको उसमें बताऊंगा, अभी तक की observation भी बताऊंगा. इसके अलावा इसके बाद then when we receive, so come September 15th and we have received all of your grant applications, we do the eligibility screening. कि जिसमें हम देखते हैं कि ये लीगली रजिस्टर्ड फर्म्स हैं या नहीं, ऑल्दो वो EOI में भी हो जाता है हमारे पास. If you have filled up EOI and you are just anxious कि भाई मैंने जो EOI में इंफॉर्मेशन दी है वो डिफरेंट है from the grant application, just relax, क्योंकि आप हम we won't hold you on the information that you have submitted on EOI. जो इवैल्यूएशन है वो आपकी ग्रांट एप्लीकेशन जो आपका बिजनेस प्लान है उस पे होती है, आपके EOI पे नहीं होती. So once we receive all of the grant applications, we evaluate. Evaluation criteria हमने include कर दिया हुआ है as part of the RFA guidance. मैं evaluation criteria specifically भी आपके साथ share करूंगा, but just to give you an overall approach कि we do it on a values-centered approach that we call the DFVA approach. Desirability, feasibility, viability, and adaptability to the changing environment or the competitive context. We do have specialists and sector experts evaluating your application. We give a level playing field for all of the application. Equal amount of attention is being given, and all of the applications are being evaluated by a committee of 3 evaluators. That includes a business analyst. एक उसमें business analyst होते हैं, दूसरे उसके अंदर investment या financial reviewer होते हैं, और third expert is a technical expert of the specific technical sector that you are in. इसके बाद, so we do not outrightly accept or reject any applicant. हम क्या करते हैं कि जो ओवरऑल पूल आता है उसमें से हम रैंक कर लेते हैं all of the applications on the comparative ranking. For instance, आज के इस पूल में हमारे पास कोई एक एप्लीकेंट आया जिसकी ओवरऑल रैंकिंग हो सकता है कि उनकी रीजनेबल एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर FDIR 1 मिलियन, और उस 1 मिलियन से ऊपर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट कोई नहीं है हमारे पास, तो इन द रैंकिंग दैट एप्लीकेंट वुड गो इन द टॉप. और बाकी भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के साथ साथ. So if you couldn't succeed in one application round, we encourage you to work on your expected results and the economic growth side of your application, the sustainability
and innovation side of your application, and also the inclusion, के उसमें you can reapply. You can apply with multiple grant application. आप एक से ज़्यादा grant application भी apply कर सकते हैं. इसमें आप अगर आप ये समझते हैं कि आपका ग्रोथ, आपका एफडीआई का एंगल भी है और आपके पास यूएस पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड का एंगल भी है, आप एक ही ग्रांट एप्लीकेशन को दोनों पर्सपेक्टिव्स के लिए भी फिल कर सकते हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 20 40 मिलियन 4 करोड़ मिल जाएंगे. आपका ओवरऑल ग्रांट साइज वही 20 मिलियन पी के आर होगा. अगर आपने मल्टीपल सेक्टर्स के लिए या मल्टीपल कंपनीज के लिए अपनी आप ग्रांट एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो भी दे सकते हैं. हो सकता है प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाए, हम इक्वल अमाउंट ऑफ अटेंशन तमाम को देंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ अवार्ड वी विल जस्ट बी अवार्डिंग वन ग्रांट एप्लीकेट. अच्छा जी, फिर व्हेन वी आस्क फॉर द पिच सेशन, जो टॉप एप्लीकेंट्स हैं उनको हम ये चांस देते हैं कि दे कैन डू अ पिच सेशन. और इस pitch session में they come and we have an in-person interactive session with a group of panelists, कि जिसमें हमारे initial evaluation से भी कुछ questions हैं, वो भी answer हो जाते हैं और आप अपना pitch deck उनके सामने share करते हैं. So once selected, we then go into a pre-award risk assessment stage. So the until stage 5, आपका जो business proposal है, that is being evaluated and ranked. Step 6 and onwards, आपकी organization की assessment शुरू हो जाती है. यही वजह है कि when a USAID or an institutional donor such as USAID, इनका जब brand name आपके साथ attach हो जाता है as a donor or as a partner, आपकी reputation जो है वो बहुत enhance हो जाती है. You become more bankable because they know कि you have passed through the due diligence part of it. प्री अवार्ड रिस्क असेसमेंट में हम ये चेक करते हैं, क्योंकि हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, हम ये चेक करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज हैं या नहीं उसको परफॉर्म करने की, और आपकी ओवरऑल ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी है. और जहां तक हो सके एज मच एज पॉसिबल वी डू प्रोवाइड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स एज वेल. हम आपकी कैपेसिटी को भी बिल्ड करते हैं साथ साथ, कि ताकि आपको एक हाई रिस्क एप्लीकेंट से लो रिस्क एप्लीकेंट पे ले आए. वी हैड गॉट अ वेरी गुड सक्सेस स्टोरी, और कई और भी ऐसे थे इन आवर प्रीवियस ग्रांट प्रोग्राम चैलेंज फंड के जो मैंने आपको जिक्र किया. उसमें देयर वाज अ ग्रांटी फ्रॉम लोअर दीन जो ऑलिव प्रोसेसिंग पे काम करते थे. हिज कॉन्सेप्ट वाज रियली गुड, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी वाज कंसिडर्ड एज अ हाई रिस्क. तो उसमें वी कुडंट अवॉर्ड that specific entity at that time. Lekin later on for the next solicitation, he really worked hard on the areas that we had identified. और उनकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो गई. आइडिया तो उनका वैसे भी टॉप रैंकिंग में था. एंड देन दे reapplied again for the next round and they became our grantee. अच्छा जी, फिर इसके बाद negotiation की stage आती है. We work with you. Since these are performance-based milestones that you set and we also set it with you with the mutual consent, we negotiated with you so that to make your case more compelling for USAID. इसके बाद जी हम जाते हैं for the vetting of potential grantees. So all of the grant applicants के जिनका overall size of award is exceeding or equal to $25,000, हम उसकी एक vetting करवाते हैं through the US Embassy. It's just like vetting of maybe a US visa, लेकिन वो तो काफी टाइम लग जाता है, लेकिन organizational vetting काफी जल्दी हो जाती है. After that, we proceed towards the uh, approvals. So once we get the vetting, we actually get your case submitted to USAID to get their approvals. Then when the approval is received from USAID, your grant is then awarded. आपको intimate कर दिया जाता है, and based on the performance based milestone आपकी monitoring होती है. So for each of the grant that we award, we expect कि इसके अंदर 2 to 5 या 2 to 3 milestones हो
इससे ज़्यादा ना हो। और उसमें ये है कि बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड माइलस्टोन्स होते हैं। आप ही बताते हैं कि ये इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए कौन से डिलीवरेबल्स होंगे जिसको आप अचीव कर रहे होंगे, और वो हम आके सर्टिफाई करेंगे। एडवांस पेमेंट्स इशू नहीं की जाती। इसमें रीइम्बर्समेंट मॉडल के ऊपर होता है, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एंड देन इन स्टेप 12 द ग्रांट इज बीइंग क्लोज्ड, और आफ्टर द क्लोजर we ask for you to share your success numbers with us, कि आपका कितना यूएस पाकिस्तान ट्रेड बढ़ी, अगर आपने एफडीआई रेस किया है तो कितना एफडीआई रियलाइज हो गया, और कितनी एफडीआई की अपॉर्चुनिटी आपके पास खुली इसके बाद। अच्छा जी, फॉर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस फॉर बोथ द एफडीआई एंड यूएस पाकिस्तान bilateral trade grants, the solicitation, like I said, is valid until September 15th. We'll have a we are conducting the pre-application orientation session. We give you a 6 weeks time to submit your application. और जो evaluation का process है and combined with the pitch session, it may take up to 4 weeks. Pre-award risk assessment and the grant approval, it may take approximately up to 6 weeks as well. So the anticipated start date of your implementation would be around December 2022. अब इससे पहले की जितनी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हुए हैं अपने बिजनेस पे, जो एफडीआई रेस कर चुके हुए हैं, वो तो ओवरऑल आपकी एक इवैल्यूएशन में आपको टॉप रैंक पे लेकर आ रहा हो, या आपकी एक स्किल सेट बता रहा है, आपका एक स्केल बता रहा है। लेकिन जो आप एक्सपेक्टेड एफडीआई और जो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन यूएस पाकिस्तान bilateral ट्रेड है, दैट नीड्स टू बी फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो आपका और हमारा परफॉर्मेंस डेट, एक परफॉर्मेंस डेट आपकी एग्रीमेंट डेट है, उसके बाद की आपकी पीएसआई की रिक्वायरमेंट और आपकी एफडीआई और आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वो आएंगे, और वो दैट वुड गेट मटेरियलाइज्ड। एलिजिबिलिटी के हवाले से मैंने आपको पहले बताया कि इट्स जस्ट वन एज एन ओवरऑल we expect कि the entity is legally registered in Pakistan. It could be of any size. और यह है कि इसमें चूंकि हमने इसको we have kept it very flexible because we know कि जो investments, international investments in the form of FDI and US-Pakistan bilateral trade linkages are two uh, deliverables that are not easy to achieve. लेकिन ये हो सकता है कि there is a startup और वो एक इतनी इन्वेस्टमेंट की स्टेज में है कि they can attract a lot of FDI, right? और हो सकता है कि एक मैच्योर्ड कंपनी के पास वो एफडीआई की अपॉर्चुनिटी ना हो। तो इसी वजह से वी हैव केप्ट इट ओपन ऑफ एनी साइज ऑफ बिजनेस, बट दैट नीड टू बी लीगली रजिस्टर्ड। In terms of FDI and US-Pakistan bilateral trade, we do have some desirables. For instance, कि जैसे FDI है, इसमें you need to have a potential or some deals in pipeline. कुछ deal stage आपकी होनी चाहिए, कुछ sort of talks होनी चाहिए आपकी, कुछ meetings initiate आपने की हुई हो with an investment opportunity, कि जो कि हमें ये sense दे सके कि these grants funding would not be used as an experiment of a new startup, or maybe these grants opportunity would not act as support for a general growth of an organization, right? लेकिन but it would yield international investment in terms of FDI. इसके अलावा जो फर्म्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस या एंटिटीज हैं who are willing to do the US Pakistan bilateral trade और ऑलरेडी कर रहे हैं और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, they should have a linkage on board. उनका एक existing linkage होना चाहिए within the US counterparts, और कि जिसको वो एक्सपैंड करना चाहिए, या फर्ज करें कोई एवेन्यू है कि जिसको वो नहीं कर पा रहे क्योंकि दे लैक इन सम एक्सपर्टीज, दे लैक इन सम in-house capacity, they lack in some kind of certifications maybe, right? और वो उस वजह से अचीव नहीं कर पा रहे, वो उस वजह से अपना यूएस का क्लाइंटेल को नहीं टैप कर पा रहे। तो उस स्केल पे लेकर आने के लिए कि ताकि यूएस का क्लाइंट आपके बिजनेस में
इंटरेस्टेड हो जाए, आपका एक ट्रेड पार्टनर बन जाए। एंड दैट कुड बी वाइस वर्सा। अगर आप पाकिस्तान में यूएस के लिए मार्केट्स ओपन कर रहे हैं तो अगेन कुछ आपका एग्जिस्टिंग लिंकेजेस होना जरूरी है। Last but not the least, the overall proposed solution must support the achievement of USAID IPA goals and objectives. जो मैंने कई दफा बताया है और मैं आगे भी बताता रहूंगा ताकि आपको पक्का पक्का रजिस्टर हो जाए कि we have got two goals or two objectives, two prime objectives. One is to expedite, uh, mobilize the private sector investment as part of the grants funds as well. To leverage foreign direct investment, international investment, जो हमने आपको बताई. The other objective that we have is to increase the US-Pakistan bilateral trade. There are certain organizations which would be considered as ineligible, कि जिसमें यह है कि firms or applicants who fail to provide any documentary evidence, कोई incomplete applications. हमारी एक आदत है कि हम आखिरी टाइम तक वेट करते हैं एप्लीकेशन सबमिशंस को और शायद उसको रिव्यू करी जाते हैं, और होता यूं है कि लास्ट मिनट पे लाइट चली जाती है, इंटरनेट डाउन हो जाता है, अटैचमेंट्स नहीं जा रही होती, या कोई और इशू होता है, या जिसकी वजह से हम इनकम्प्लीट एप्लीकेशन देते हैं. आपने ग्रांट एप्लीकेशन टेम्पलेट सबमिट कर दिया उसका एनेक्स ए, लेकिन आपने बजट एनेक्स बी नहीं सबमिट किया, या आपने जो उसका सेल्फ असेसमेंट फॉर्म है एनेक्स सी आप वो नहीं सबमिट कर पाए, राइट? तो इस हवाले से ये है कि इनकम्प्लीट सबमिशंस वुड बी कंसिडर्ड एज इनएलिजिबल. अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस और बिजनेसेस के जिनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है वो भी they are not eligible to apply. Any entity that has been found to have misused with USAID funds in the past, क्योंकि within the donor community we are engaged, we are pretty much connected. अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा या कोई through your references we get to know, तो वो भी that would be a negative mark. Any applicant who refuses to sign any or all of the required certifications, ये basically एक certifications may look as an, काफी लंबी चौड़ी सर्टिफिकेशंस आपको लग रही होंगी. जब आप इसको देखेंगे इट में sort of harass you, लेकिन यह है कि ये basically these certifications are meant to know that your organization is not part of any of the part organizations. किसी किस्म की सेक्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, ड्रग्स, इस चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. फिर देन स्टाफ, सब कॉन्ट्रैक्टर्स विद यूएसए के साथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई. अच्छा जी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखते हैं. सो the best part of these comparative grants offerings जो कि institutional donors करते हैं like of USAID, कि they do provide you with the evaluation criteria, कि हमारा evaluation criteria क्या होगा. So it actually gives you some sort of a cheat sheet कि जिसमें आप once you are done with your grant application आप ये देखते हैं कि where do you score, और आप अपने पीयर ग्रुप से किसी और मेंबर से उसको चेक करवा सकते हैं कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप मुझे कहाँ देख रहे हैं. So the evaluation criteria that we have devised is built upon three important core principles. One is in economic growth, the other one is innovation and sustainability, and third one is inclusion. That is the women and youth. For the economic growth, uh, 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 for FDI grants, you would see that it would carry the most of the marks, right? So for FDI, the first one is FDI potential. We need to see your ability to materialize international investments. ये already आप, as we call the deal stage, आपकी क्या है, आप किस हद तक अपने investor के साथ connected हैं, कैसे आप हमें convince करते हैं, through maybe a supporting document, through your grant application, कि आपकी ये सर्विसेज या ये आपकी ये ऑफरिंग्स या आपकी मर्चेंडाइज इन्वेस्टर्स को पसंद आई हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी कंपनी पे, वो कीन है, वो ईगर है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को, आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी है, जैसे आप इनोवेशन में हम आगे जाके बात करेंगे, ये कुछ आपका कंपैरेटिव एज है उनके साथ.
or what is the potential of leveraging the private sector investment. As we know कि international investments without having local investment is nearly impossible. क्योंकि वो initially आपको invest करना है अपने business में to bring it to a certain stage कि ताकि वो इतना competitive हो जाए कि एक बाहर का investor invest करे आपकी company में, right? तो उसमें आपकी अप्रोच को देखा जाएगा कि व्हाट इज योर अप्रोच ऑन leveraging private sector investments, क्या नंबर आपने दिया हुआ है in your budget that will depict the private sector investment. और मैंने आपको बताया it could be in the form of uh, third party investment, it could be a bank, it could be a cash line, maybe it could be some FDI और remittance, जो अगर आपके कुछ लोग कंपनी के बाहर हैं स्टेक होल्डर्स और वो इन बाहर से पैसा भेजते हैं तो वो रेमिटेंस होगी, PSI में कंसिडर होगी बट नॉट FDI. और FDI के लिए उनके स्टेक्स क्योंकि आपने उनके साथ शेयर करने होते हैं. So with the previous FDI received, if you have got some previous experience, अक्सर लोगों की previous funding होती है जिसमें उन्होंने पहले सीड फंडिंग या प्री सीड फंडिंग कुछ उन्होंने रेस की हुई हो या बास लोगों ने सीरीज ए तक लोग गए होते हैं. तो एनी सॉर्ट ऑफ FDI received that would give you additional 5 marks, लेकिन उसका प्रूफ आपको as part of application हमें जरूर देना है. अच्छा जी, then we have kept 25 marks for innovation and sustainability. और इनोवेशन के लिए हमने ये 2 लाइनर सा कुछ इसको कवर करने की कोशिश किया है, but that's illustrative because we cannot sort of summarize innovation in just mere 2 sentences. लेकिन we'll see your ability, your creativity. It could be a development of a new product or services कि जो इसके अंदर further development innovation लेकर आते हैं. तो innovation could be somewhere else, कोई इन्वेंशन हुई होगी, लेकिन फॉर योर बिजनेस दिस कुड बी कंसिडर्ड एज इनोवेटिव. फॉर इंस्टेंस अगर आप बिल्कुल मैनुअल बिजनेस प्रोसेसिंग कर रहे हैं आपकी और आप यू गो ऑटोमेटेड, आप बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं, सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इनोवेशन. यू आर इन्वॉल्विंग सम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, मे बी सम mobilizing private capital, knowledge or transfer, or some environmental sustainability maybe. So that comes under innovation. Business sustainability beyond grant implementation is also is one of the most essential step. So we receive 2 kind of application. One is जिसमें हम हमें कोई कहता है कि जी my issue right now is the overheads. मैं अपना बिजली का बिल नहीं पूरा कर सकता, मैं अपने ओवरहेड्स के खर्चे नहीं पूरा कर सकता, मैंने इतना ह्यूमन रिसोर्स लेकर आना है, या मेरी कस्टमर एक्टिवेशन नहीं है, मैं 1.5 करोड़ रुपया लगाऊंगा अपनी एडवर्टाइजिंग पे और मेरे पास एक ह्यूज कस्टमर आ जाएगा. उसी सेक्टर में एक और ग्रांट एप्लीकेशन है, वो हमारे पास आती है और जिसमें जरा ज्यादा सस्टेनेबल इनपुट्स मांगते हैं. वो कहते हैं कि जी मैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे काम करूंगा जो मेरे बिजनेस को परपेचुअल बना देगा, फॉर स्केलेबिलिटी आ जाएगी उसके अंदर. वो कहते हैं कि मैं कोई एप्लीकेशन, कोई ICT बेस्ड इंटरवेंशन करूंगा, कोई मशीन की इंटरवेंशन करूंगा, या कोई और इनोवेशन ऐसे करके लेकर आऊंगा दैट विल ऐड टू द इम्प्लीमेंटेशन, that will add to the sustainability beyond grant implementation. So when we evaluate, when the reviewers evaluate this, or jab USAID makes a decision, so they would ask, okay, down the line 8 months when the grant funds are plucked out of the system, how would this entity sustain? For instance, आपने इतना ज़्यादा staff ले लिया, how would you retain them? आप एक ह्यूज मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इफ यू डोंट हैव द स्केल कि जो जब उससे एक्टिवेशन आए उसको आप सर्विस प्रोवाइड कर सकें या उसको आप प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें, तो हाउ वुड यू सर्वाइव दैट? सो देयरफॉर आई आस्क यू अगेन एंड अगेन कि ऑल्दो इसके मार्क्स तो 10 है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है. Sustainability is something that I would give you as a secret recipe
कि add sustainability as much as possible to your grant application. Increase competitiveness and productivity, obviously वो आई जाएगी, and you need to provide information around that as well. फिर आपकी operational strength क्या है, आपके existing networks, आपके resources, आपकी financial capabilities, आपके clientele क्या है उसके बारे में. अच्छा, inclusion में इस दफा we have kept 15 score for inclusion for women and youth. We have kept ourselves a target of 30% to go to contribute towards the inclusion. And in our previous experience, like of the Challenge Fund Grants Program, हमने इससे भी हमने 10% रखा था और almost 28% से supersede कर दिया था. So even in this one, we are now more focused towards inclusion and women and youth. So firms owned or run by women. So firm needs to be a woman owned and women led, or youth led and youth owned. इसमें especially for the women led businesses एक बड़ी general किस्म की एक observation है हमारे पास कि जो कि हमेशा आती है. उसमें यह है कि कई लोगों के business partners खवातीन होती हैं जो कि on papers होती हैं but they are not found anywhere in the business. किसी decision making में या किसी किस्म की परफॉर्मेंस में या जो उनकी presentations हैं उसके अंदर वो नहीं होती. So that actually goes counterproductive. So if the organization that is being led and owned, by owned we means the maximum shareholding needs to be with the women. और अगर वो जो है कोई sole proprietor है तो उसमें तो obviously 100% ownership would be with the women. Likewise with youth, we consider youth of age 29 and younger. And we ask you to provide a supporting document to be considered as a women-led organization as well. Right? अच्छा, फिर इसके बाद जो inclusion में दूसरा ये है कि we have kept some marks for the women and youth that make most of the employees. कि आपकी organizational structure किस किस्म का है वो आप हमें बता सकते हैं जिससे ये depict हो. इसके अलावा where the products or services would affect positively towards women and youth. So we were on the evaluation criteria. इसमें evaluation criteria में we were done with the inclusion. So the overall ranking for the evaluation criteria is 100 marks. So what we actually do is we do not outrightly accept or reject any grant application. We rank them up in accordance to this evaluation criteria. So for instance, हमारे पास अगर evaluation एक pool है और उसमें comparatively economic growth, innovation and inclusion से highest rank के applicants आ जाते हैं, so we will ask them we will ask the topmost candidate of them for a final pitch session, जो इसके बाद का एक step है. Or if you couldn't get into the top ranking, maybe in the next solicitation you can perhaps improve on your expected results. कि जिसकी वजह से आपकी जो है दोबारा रैंकिंग ऊपर जा सकती है. अच्छा जी, इसमें जो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में यूएस पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड ग्रांट है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा चेंज है, बाकी इनोवेशन एंड इंक्लूजन वुड रिमेन द सेम. Because as the name indicates, we are more focused towards the US-Pakistan bilateral trade. It could be in the form of exports. Either आप यहाँ से अपनी merchandise और services export कर रहे हैं या आप US के लिए पाकिस्तानी markets open कर रहे हैं. So we wish to see, या the evaluators would see कि आपका जो bilateral trade में आपके existing linkages क्या हैं या आप currently आप कैसे export performance आपकी चल रही है या US के साथ क्या कर रहे हैं, या अगर
फॉर इंस्टेंस आपने कुछ इनिशिएट किया हुआ है, आप कन्विंस करवाते हैं अपनी ग्रांट एप्लीकेशन पे कि ये मेरे एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स हैं और मैं इतनी इनके साथ मेरी बात हो रही है, और अगर मेरा स्केल इतना हो जाए, जो एक मेरा रिस्क है मैंने इन्वेस्टमेंट से अचीव करना है, और उसके बाद मेरी ग्रोथ इन द यूएस पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। हो सकता है अभी आप एक कंट्री किसी एक स्टेट में काम करें यूएस की, और आप एक मल्टीपल स्टेट्स में चले जाएं, या आप एक कंपनी के साथ काम करें उसके साथ आप एक्सपैंड कर देते हैं। लाइकवाइज आपका पोटेंशियल टू लिवरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वो क्या है? एज आई अर्लियर मेंशन्ड, इट्स नो ब्रेनर कि विदाउट getting the FDI or US Pakistan bilateral trade linkages would be impossible. यूएस में बैठा हुआ काउंटर पार्ट जो है वो आपको आपके साथ अपनी ट्रेड को कंटिन्यू क्यों करेगा कि जब उसके पास इतने बहुत सारे और ममालिक भी हैं, तो आप जरूर कोई कंपैरेटिव एज दे रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा एनहेंस्ड होगी प्रोबेबली, या आपका स्केल इतना होगा कि जो उसको अचीव कर सकेगा, जो उसकी डिमांड है। तो इस वजह से the level of private sector investment that is needed to leverage to get this link on, तो उसमें हम आपके बारे में आपके commitments within the budget in terms of PSI that could be part of your contribution or any third party's contribution. फिर आपका इसके अंदर कुछ 5 marks हमने रखे हैं for those के जो कि इसके अंदर एफडीआई पोटेंशियल भी देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसा हो सकता है कि आप किसी एक यूएस बेस्ड फर्म के साथ काम कर रहे हैं, कोई सर्विसेज या मर्चेंडाइज आप उनको दे रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ठीक है आप इतनी स्केल ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विसेज तो हम लोग ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। तो अक्सर ऐसे होता है बाहर की कंपनियां पाकिस्तान में या और ममालिक की कंपनियों में एफडीआई एज इन काइंड सपोर्ट वो अपनी मशीन इनपुट्स वगैरह लगा देती है, या टेक्नोलॉजी देती हैं, या कोई एक्सेस देती हैं ऐसे टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का, और फिर उसके उसमें कुछ किसी किस्म की प्रॉफिट शेयरिंग या स्टेक होल्डर शेयरिंग उनके साथ होती है। तो इफ देयर इज सम एफडी अटैच टू इट, तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी भी मिल सकते हैं। For innovation, sustainability, and inclusion, these are the same as I've just previously shared. इसमें भी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट इज द बिजनेस सस्टेनेबिलिटी बियॉन्ड ग्रांट इम्प्लीमेंटेशन का है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसके चांसेस कम होंगे टू फ्लाई विद द ओवरऑल हाई रैंकिंग बिजनेस एंटिटीज दैट वी हैव। इसके अंदर भी हमारे पास ओवरऑल रैंकिंग इज 100, लाइक आई सेड कि हम इसमें भी कंपैरेटिवली रैंक करते हैं तमाम ग्रांट एप्लीकेशंस, और जो टॉप रैंकिंग के एप्लीकेशन फॉर द पिच सेशन। अच्छा जी, फिर इसमें जो नेक्स्ट ये है स्लाइड, इसमें ऑल्दो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रेजेंटेशन पे में से ज्यादा मैं कंसंट्रेट कर सकूं टुवर्ड्स द ग्रांट एप्लीकेशन टेम्पलेट्स, जो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, और उसमें एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे, और एंड द ग्रांट बजट template as well. लेकिन जो important point है in this slide for you to know is that the overall vehicle of the grant that is being awarded, जो हमारे पास एक legal agreement है उसका, that is known as fixed amount agreement or fixed amount award, और इसमें हम we do not provide any sort of advances. So you set performance-based milestones, or these performance-based milestones are when met through you, यानी आप पहले इन्वेस्ट करते हैं कि ताकि वो माइलस्टोन्स को अचीव करें। डिलीवरेबल्स हम विद म्यूचुअल कंसेंट बनाते हैं, और जब हमारी टीम आके उसको वेरीफाई करती है तो आपको आपकी डिसबर्समेंट्स हो जाती हैं। वी आल्सो चेक द एनवायरमेंटल साउंडनेस, इस एक्टिविटी से रिलेटेड किसी किस्म की एनवायरमेंट रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई
mitigation is required. So this is something that you don't really need to be worried at this stage, क्योंकि हमारे consultants आपके साथ काम करेंगे when you are at the time of pre-award, के जिसकी basis पे आपकी environmental compliance को हम चेक कर सकें और आपको accordingly गाइड भी कर सकें. सर्टिफिकेशंस हैं कुछ, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कुछ मैंडेटरी सर्टिफिकेशंस हैं कि आपका ताल्लुक किसी पार्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, कोई इस किस्म के इश्यूज में नहीं है. कुछ इन एलिजिबल कॉस्ट हैं, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो आप अपने कंट्रीब्यूशन में तो कर सकते हैं, लेकिन डोंट मेक दोस कॉस्ट पार्ट ऑफ द ग्रांट फंड. जैसे जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन है और एनी सॉर्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, और स्पेशली कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, जैसे फर्ज करें हॉस्पिटैलिटी इज वन ऑफ द टारगेट सेक्टर्स और कोई एफडीआई आ रही है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, और आप ये कहते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो मैं अपनी थर्ड पार्टी पीएसआई रिसोर्सेज से करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको फर्ज करें किचन एस्टैब्लिश करना है, कोई इक्विपमेंट्स चाहिए आपको, आपको कोई इसके हवाले से कोई ऐसी ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको चाहिए, तो वो आप हमसे कर सकते हैं. इसी तरह जितनी जो वर्किंग कैपिटल है, that should not be included as part of grants fund, क्योंकि हमें आइडिया है कि पास एग्री के और लाइट इंजीनियरिंग के विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो कि बड़े इंटेंसिव हैं ऑन वर्किंग कैपिटल, वो महंगा रॉ मटेरियल आता है, लेकिन दैट रॉ मटेरियल इज देन बीइंग कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू, तो वो आपकी पीएसआई या आपके एफडीआई नहीं काउंट होगी. सेरेमनीज, पार्टीज, किसी किस्म की सेलिब्रेशन, रिप्रेजेंटेशंस, इस किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो. अच्छा जी, ये इसमें सो वी विल रिज्यूम with the ineligible expenses. इसमें कुछ अगर कोई कवर्ड किस्म के टेलीकम्युनिकेशन है या कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह आपने लगाने हैं, तो these should not be included as part of grant fund. अल्कोहलिक बेवरेजेस तो पाकिस्तानी लॉ में भी नहीं है, और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड सीरिया आर नॉट अलाउड, क्योंकि उनके साथ friendly ties nahi hai with the US, and creation of any sort of endowments are not eligible. कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस भी हैं, I'll skip through these. इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँ कि any dollar or any PKR spent through the USAID's grant funding, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग होती है with the USAID brand. अगर आपने देखा हो कि हमारे जो एग्जिस्टिंग ग्रांटीज हैं उनके कुछ वेबसाइट्स वगैरह में पार्टनर में आपके पास यूएसए का लोगो और ब्रांडिंग नजर आ रही होती है. लाइकवाइज ये जैसे मेरी स्लाइड है, इसमें आप टॉप लेफ्ट पे देख सकते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू डोंट रियली नीड टू वरी अबाउट. हम वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप अपना कोई ब्रांडिंग मार्केटिंग प्लान दें, लेकिन जस्ट अ हेड्स अप के एट प्री अवार्ड स्टेज वी हैव गॉट एक्सपर्ट्स अवेलेबल जो आपके साथ एक पूरा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग प्लान बनाएंगे फॉर योर इम्प्लीमेंटेशन. अच्छा जी, नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन फॉर्म. ये मैंने अपने पास ओपन कर दिया हुआ है. फहीम, आपने मुझे बताना है कि ये आपके पास विजिबल है, नहीं आ रहा? अच्छा, जी अभी विजिबल है, ठीक है, ऑल राइट. ये जी हमारा फर्स्ट टेम्पलेट है, और ये बेसिकली दिस इज द टेम्पलेट की जिसको हम एवेलुएट करें. जो एवेलुएशन क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है, उसके जितनी भी क्राइटेरिया के पार्ट्स हैं और जो 3 हमने पिलर्स उसके बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का, इनोवेशन का एंड इंक्लूजन का, वो तमाम वन वे और दी अदर
रिलेट करते हैं या ये टेम्पलेट उनके साथ रिलेट करता है। ये एडिटेबल फॉर्म में है, यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी, इसको आप जितना बेहतर बना सकें, चार्ट्स, इन्फोग्राफिक्स, कोई इंफॉर्मेशन, जितना इसको फैंसी बनाना चाहें आप कर सकते हैं, एज मच एज के इसका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन या इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट वो ना खराब हो। ठीक है, हमने स्टार्ट में ही आपको इसके कुछ गाइडेंस दी है, और ये हमने आपको स्टार्ट में इसलिए दी है ताकि आप इसको पढ़ें। अभी ये आप देखेंगे हर एक आइटम वाइज, हर एक क्वेश्चन वाइज हमने इसके अंदर मेंशन की हुई है। अभी आई एम जस्ट स्किपिंग थ्रू इट ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इट स्टार्ट्स विद एन एग्जीक्यूटिव समरी। मैं अगर एक ग्रांट एप्लीकेशन फिल करूं तो आई वुड लीव एग्जीक्यूटिव समरी फॉर द लास्ट, और मैं पहले ग्रांट एप्लीकेशन सारी फिल करूंगा या बिजनेस प्लान सारा बनाऊंगा, और उसके आखिर में एग्जीक्यूटिव समरी लिखूंगा। उसका ये फायदा होगा कि जब मैंने ग्रांट एप्लीकेशन सारी फिल करती होगी, मैं उसको बड़ा इफेक्टिवली और बड़ा अच्छे तरीके से कैंडिडेटली समराइज कर सकूंगा अपनी एग्जीक्यूटिव समरी में। इस एग्जीक्यूटिव समरी के लिए हमने आपको कुछ एग्जांपल भी दी हुई है, ऑल्दो हम बड़ा वी रिफ्रेन ourselves to give any sort of examples, हम एग्जांपल्स नहीं देना चाहते, क्योंकि होता ये एक बड़ी फनी किस्म की सिचुएशन आपको बताऊं कि लास्ट टाइम हमने किसी एक टेम्पलेट पे वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जांपल दी, और आप यकीन करेंगे 20-25 एप्लीकेशंस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर आ गई हमारे पास। तो लेकिन हमने यहाँ जरूरी समझा कि आपको एटलीस्ट कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में एग्जांपल दे दें, जैसे हमने एक आईसीटी फर्म की दी है। सो फॉर द एग्जीक्यूटिव समरी आपने इसको बड़ा प्रिसाइसली मेंशन करना है कि कैसे, हाउ वर यू फाउंड इट, यू योर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सेक्टर में, कौन सा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, या कौन सा वो जिसको वो कहते हैं कस्टमर्स फ्रस्ट्रेशंस थी, जिसको आपने फुलफिल किया और आपने एक अपना बिजनेस वेंचर सेटअप किया, स्टार्टअप बनाया, वो क्या आइडिया था उसका, कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, और अभी आपकी अ, कितनी आपकी फॉलोइंग है, क्या आपके कस्टमर्स हैं, क्या आपका सोशल मीडिया कवरेज है, अ, कैसा आपका नेटवर्क है। अगर आप एफडीआई से बात के हवाले से कह रहे हैं तो आपने बताना है कि आपकी इन्वेस्टर्स या इंटरनेशनल इन्वेस्टर के साथ बात हो रही है, वो इंटरेस्टेड हैं टू इन्वेस्ट, और लेकिन वो चाहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी ये है कि आप इतनी स्केल पे पहुंच जाएं, और आपने उसके लिए कितना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया हुआ है, पीएसआई को, और उस पीएसआई को मोबिलाइज करने के बाद कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप ग्रांट फंड से जो है हेल्प सीख कर रहे हैं कि वो आपको मिल जाए, तो फिर आपकी ओवरऑल एफडीआई एक्सपर्टाइट हो जाएगी। अभी आप इतना स्केल है, आपका इतना स्केल हो जाएगा, और इतनी अमाउंट ऑफ पीएसआई से एक्स अमाउंट ऑफ एफडीआई आपको मिल जाएगी। ये नंबर्स, ये कंपैरिजंस, दे एक्चुअली स्पीक्स अ लॉट। अच्छा जी, फिर ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड, आपका ईयर ऑफ इंसेप्शन क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे हमारा मेंशन करना। अक्सर कई बिजनेसेस होते हैं कि जो कि कॉटेज इंडस्ट्री या पहले फेसबुक या सोशल मीडिया पे अनरजिस्टर्ड होते हैं, और कई सालों की मेहनत के बाद वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो हम उनकी वो तमाम पूरी जर्नी को अकाउंट फॉर करना चाहते हैं ऑन दी evaluator's perspective। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, इधर इट इज ऑन एनटीएन और एससीसीपी। आपका टारगेट सेक्टर क्या है, मैंने आपको बताया आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भी सेंड कर सकते हैं इस इन 3-4 टारगेट सेक्टर। अच्छा जी, लेट मी शेयर स्क्रीन। वी वर ऑन द टारगेट सेक्टर्स। उसके बाद जो है फॉर द प्रपोज्ड लोकेशन, जैसे अगर फर्ज करें जहाँ पे जो आपकी करंट लोकेशन है, जहाँ आपकी बिजनेस लोकेशन है, इफ यू आर बेस्ड इन इस्लामाबाद, इफ यू आर बेस्ड इन कराची, जहाँ से आप बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं उसकी लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। टोटल फंड्स टू बी रिक्वेस्टेड, जो टोटल आपकी ग्रांट फंड्स हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा कि विद फ्रॉम द 20 मिलियन पीकेआर जो आप ग्रांट फंड्स ले रहे हैं,
उसके बारे में आप यहाँ मेंशन कर देंगे। जो टोटल फंड्स प्रपोज्ड एज योर कंट्रीब्यूशंस आ गए, इसमें से मतलब इस फंड के अलावा आपकी ये थर्ड पार्टी की कंट्रीब्यूशंस क्या है, जो पीएसआई है, उसकी अमाउंट आप यहाँ रख लेते हैं। 10th 11th 12th एंड 13th जो है क्वेश्चंस, दीज आर रिलेटेड टुवर्ड्स इंक्लूजन, जिसमें आप बताते हैं कि इज women owned or youth owned, what percentage are they having. Question 14 is about the duration of implementation, that shall not exceed 8 months. Then we ask for you to provide us the contact information. इसमें we expect कि आप हमें जो आपके फाउंडर्स या जो की फाउंडर्स या को फाउंडर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनका नाम यहाँ पे अक्सर होता यह है कि हम कभी कभी जब कोई कांटेक्ट करते हैं और हमें पता लगता है कि वो कोई जूनियर था जो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया और वो कुछ कांटेक्ट भी नहीं देना चाह रहा। इसी तरह ईमेल एड्रेसेस, आपके मोबाइल नंबर्स वगैरह ठीक होने चाहिए। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेसेस ठीक नहीं लिखे होते, स्पेशली मोबाइल नंबर्स, कोई डॉट बीच में आ जाता है या कोई नंबर्स मिस आउट हो जाते हैं। की मैनेजमेंट डिटेल्स, आपके जो फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स एंड योर फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स, जो फाइनेंशियल मैनेजर है, इन 3 लोगों का आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये की मैनेजमेंट डिटेल हम यहाँ से पिक करके इंफॉर्मेशन और वो हम भेजते हैं फॉर वेटिंग प्रोसेसेस, तो इसलिए यहाँ होना जरूरी है। आपकी ओनर की डिटेल, इसकी परसेंटेजेस क्या है, वो आप यहाँ मेंशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज इम्पोर्टेंट कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफ बताएं। अब हमारे पास दो किस्म के यूज केसेस में आपको बताता हूँ। दो किस्म की हमारे पास ग्रांट एप्लीकेशंस आती हैं। वन इज के there's a potential grant applicant, maybe he just writes, और ये एक्चुअल हुआ है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कि he actually writes कि जी प्लीज सी अटैच्ड द प्रोफाइल, और वो 136 पेज पीडीएफ का एक प्रोफाइल हमारे साथ अटैच कर देते हैं। उसके मुकाबले में एक ऐसा एप्लीकेंट की जो कि एक बड़ा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन यहाँ मेंशन करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फाउंड किया आपने, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी पार्टनरशिप्स क्या हैं, आपका इनोवेशन क्या है, आपने किस तरीके से बिजनेस परफॉर्म किया, कैसे सस्टेन कर रहे हैं, कौन से सेक्टर में कर रहे हैं, और क्या करते हैं इसके अलावा, और कई बिजनेस में आपके क्या वो है। तो इसमें पूरा एक इंट्रोडक्शन, एक ऐसा इंट्रोडक्शन दें कि जिसमें जो रीडर है या जो इवेलुएटर है, वो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो और वो आपकी पूरी ये जो ग्रांट एप्लीकेशन है इसको पढ़ें और इसमें इंटरेस्ट लें। फिर आपके लिए अच्छा, इसमें हमने चूंकि एडिटेबल फॉर्मेट है, हमने सिंपल एक एक लाइन डाली है, इसका मतलब कोई वन लाइनर रिस्पॉन्स नहीं है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं नीचे, मजीद आप जितना इसको एक्सपैंड करना चाहें। ऑल्दो 2 पेजेस तो हमने इंस्ट्रक्शन पे ले लिए हुए हैं, आखिरी पेज सर्टिफिकेशन को निकाल दे तो 3 पेज हो जाते हैं। सो योर एप्लीकेशन शुड नॉट एक्सीड 8 पेजेस एडिशनल टू दीज 3 पेजेस में। आखिरी पेज सर्टिफिकेशन का है और बाकी 2 पेजेस आपके गाइडलाइंस के हैं। फिर then the list of contact information for the 3 references, these could be your business partners, these could be your vendors, आपके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ डालेंगे और हम उनको अप्रोच भी करेंगे टू गेट द रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये दिस इज योर आस्क, आप क्या चाह रहे हैं फ्रॉम द ग्रांट फंड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस पार्ट, और इसमें आई वुड से कि आप ब्रेक डाउन करें अपनी एक्टिविटीज को। आप बिल्कुल एक वन लाइनर, और सिमिलरली दैट गोज फॉर द बजट एज वेल। अक्सर लोग बजट में और यहाँ पे लिखते हैं कि वी विल डेवलप वन MIS, और उसके बाद कुछ नहीं लिखते कि वो क्या होगा, क्या मॉड्यूल्स होंगे, क्यों बना रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है, कैसे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर आएगा, कैसे वो US पाकिस्तान लिंकेजेस को वो करेगा। तो जैसे हमें स्कूल्स यूनिवर्सिटीज में बताया गया है कि लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपका, आपको हेडिंग्स दे के स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर प्रपोज्ड एक्टिविटीज अपनी मेंशन करें। एट टाइम्स वी आर सो सोल्ड विद द आइडिया कि हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन बड़ी ब्रीफ रखते हैं, और हम समझते हैं जैसे पढ़ने वाला खुद समझ जाएगा, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। आप इसको एक दफा पढ़ के अपनी पीयर
ग्रुप में किसी को भी आप एक दफा रिव्यू करवा सकते हैं, किसी लेमैन को, ऐसे बंदे को कि जो कि ये देख ले कि भाई वाकई इज इट मेकिंग सेंस और नॉट। फिर देन पोटेंशियल फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट कि जी आप बताते हैं कि कैसे, व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू मोबिलाइज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, उसमें अभी अप्रोच क्या होगी, थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट्स कैसे, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, क्यों लोग इंटरेस्टेड हैं आपकी में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो एफडीआई आप गेन कर सकें, उसके बारे में आपने बताना है, इनोवेशन के बारे में आपने बताना है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया पहले भी, सस्टेनेबल इनपुट्स को एज मच एज पॉसिबल रखें। दिस इज आई थिंक जो आज पूरे सेशन के दो टेक अवेज अगर मैं आपसे कहूँ कि जो दो सीक्रेट रेसिपी हैं कि जो कि आपको ज्यादा कंपेरेटिव एज दे सकता है विद अदर्स, एक तो ये है कि अपनी ग्रांट एप्लीकेशन, अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपने अलाइन करने हैं towards the key indicators, the key targets that USAID has. वो क्या है? To increase the 40 million, to contribute to the target of 40 million incremental trade increase, A. And B is to contribute within the 25 million worth of PSI for an FDI worth of 75 million US dollar. एक तो ये है। दूसरा जो टेक अवे मैसेज या दूसरा जो सीक्रेट रेसिपी है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी, ऑल्दो ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट बहुत है। और हमने ये देखा है कि आपकी फाइनल पिचेस में भी और सब जगहों पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जरा काफी इंटरेस्ट होता है। तो सस्टेनेबिलिटी बियॉन्ड ग्रांट इम्प्लीमेंटेशन, सस्टेनेबल इनपुट्स डालें, क्योंकि कंपेटिटिवली दो एप्लीकेशंस हैं, एक सिर्फ ओवरहेड्स के ऊपर फोकस्ड है, दूसरा कंपेटिटिव टेक के ऊपर है, तो वो फिर ऑब्वियसली जो कंपेटिटिव है वो दे स्कोर हायर। अच्छा, फिर इंक्रीज कंपेटिटिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, वो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और जेंडर एंड यूथ के बारे में हमने काफी आपको एक्सप्लेन कर दिया। वेल स्किप थ्रू दैट सो दैट विल हैव क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 30 and 40 हैं, दीज आर स्पेसिफिक for the FDI grants. अगर if you are considering for to fill in application for US Pakistan trade grant, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। लाइकवाइज अगर आप FDI पे फोकस्ड हैं तो आप US पाकिस्तान ट्रेड वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके बिजनेस आइडिया के अंदर दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी वो एफडीआई के लिए भी इक्वली रेलिवेंट है और वो यूएस पाकिस्तान ट्रेड के लिए भी है, तो फिर देन यू कैन फिल अप बोथ ऑफ द पर्सपेक्टिव, बोथ ऑफ द एरियाज ऑफ ग्रांट एप्लीकेशन। एफडीआई ग्रांट्स के जो हमारे पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टार्ट ये कि पहले वाले क्वेश्चन तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन जो क्वेश्चन 30 ऑनवर्ड्स हैं ये एफडीआई के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो टोटल फंड्स प्रपोज्ड एज एफडीआई वो क्या है? दैट कुड बी फ्रॉम यूएस और नॉन यूएस बेस्ड। आपका जो एफडीआई है उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, और व्हाट इज द नेम ऑफ द एफडीआई सोर्स, वो यहाँ मेंशन करना है। वुड यू अलाउ यूएसए टू परफॉर्म अ रेफरेंस चेक? ये don't take this as a policing on you, लेकिन I would rather take this as an advantage, because if I am a business and I am, let's say, in talk with a VC who is based in the US, और जब उस VC को USAID independently अप्रोच करता है और वो कहता है कि जी ये इस एप्लीकेंट के लिए हम भी इंटरेस्टेड हैं कि हम इनको ग्रांट फंड दें, हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी किस हद तक है, इट एक्चुअली एड्स टू योर क्रेडिबिलिटी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान ना आने का एक बड़ा इशू क्रेडिबिलिटी का है, एक बड़ा इशू ट्रस्ट का है। सो दिस एक्चुअली एड्स टू योर ट्रस्ट, दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, आई वुड से। अच्छा जी, फिर उसके बाद 34 35 जो है ये थोड़े सब्जेक्टिव हैं, बट वी नीड टू नो द some sense of reasonability कि कब तक आपकी एफडीआई मैच्योर हो जाएगी। तो स्टेटस फॉर मैच्योरिटी ऑफ योर एफडीआई, इसमें 1 to 10, 10 being हाईएस्ट क्या है, और किस किस्म की आप इंटरैक्शंस कर रहे हैं, क्या वो 1-on-1 मीटिंग्स हैं, वर्चुअल हैं या फिजिकल हैं, या कोई पोटेंशियल एग्रीमेंट है, या कोई टर्म शीट साइन कर ली भी है आपने, लेटर ऑफ इंटेंट, कोई ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद जो टाइप ऑफ फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग है, उसके अंदर इक्विटी, डेट फाइनेंसिंग, कन्वर्टेबल नोट या डेट की कोई और टाइप है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। इवेंचुअली चाहे वो इक्विटी हो या कन्वर्टेबल डेट हो, लेकिन उसका फंड्स फ्लो पाकिस्तान की तरफ हो, यूटिलाइज हो रहे हो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एफडीआई। 3 सिनेरियोज हमने बताए हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें आप, ये हो सकता है कोई और सिनेरियो भी हो, लेकिन पहला सिनेरियो ये है कि फंड्स डोमिसाइल्ड इन पाकिस्तान फॉर यूटिलाइजेशन इन पाकिस्तान, यानी कि जो फंड्स है, आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में ही आप फंड्स को रेस कर रहे हैं और उसकी यूटिलाइजेशन भी पाकिस्तान में ही होगी। यानी अगर बाहर से भी रेस कर रहे हैं लेकिन फंड्स पाकिस्तान में डोमिसाइल्ड है, आपके पास आपके अकाउंट में है पाकिस्तानी, और आप उसकी यूटिलाइजेशन ही पाकिस्तान में होगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई होल्ड को बनाया हुआ है, कोई होल्डिंग कंपनी बाहर बनाई हुई है मे बी, या कोई और आपकी रिप्रेजेंटेशन है, कोई और कंपनी कहीं पे सिंगापुर, डेलावेयर, दुबई, ऐसे लोग यूएस में बनाते हैं कि ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स रेज कर सके। और आपने अगर किसी बाहर के अपने आर्म से इन्वेस्टमेंट रेज की है तो फंड्स आर डोमिसाइल्ड आउटसाइड, लेकिन जो स्केलिंग अप है, वो जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है, फंड्स फ्लो है, दैट इज इन पाकिस्तान। तो फिर आप इसको चेक करेंगे। और अगर एक ऐसा केस है कि आपके फंड्स भी बाहर डोमिसाइल्ड हैं और वो इंटरनेशनल ग्रोथ के लिए यूज हो रहे हैं, ना कि पाकिस्तान के लिए, यानी कि आपने वो कहीं पे जा रहे हैं, मीना रीजन में आप एक्सपेंड कर रहे हैं, गल्फ में या किसी जगह पे आप जा रहे हैं, तो उसमें फिर आप उसमें इसमें करेंगे और सब्सिक्वेंटली इसकी जो रैंकिंग होगी वो पहले दो की निस्बत भी कम होगी। एफडीआई की डील्स की टाइमलाइन आपकी क्या है? अगर आपने इससे पहले 1 to 2 years में कोई एफडीआई रेस की है, उसके बारे में हमें बताइए, उसका प्रूफ भी आपने हमारे साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 41 and 43, they are applicable to US Pakistan. These are applicable for US Pakistan trade grants. इसमें हम आपसे पूछते हैं कि फॉर 41 के व्हाट इज योर ट्रेड पोटेंशियल, आपके एग्जिस्टिंग लिंकेजेस क्या है, आपके एग्जिस्टिंग ट्रेड रेवेन्यूज क्या है, और आप कैसे इंक्रीज करेंगे। देयर कुड बी फॉर कंसिडर बोथ फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फिर इसी तरह आपकी जो फर्म है, वो अभी तक यूएस पाकिस्तान ट्रेड में एक्सेल क्यों नहीं कर पाई, वो क्या बैरियर्स थे जिसको आप इस फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू द ग्रांट आप ओवरकम कर रहे होंगे, राइट? तो उसके बारे में आपने बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज एन नोन इम्पेडिमेंट, कि हम लोग इंटरनेशनल और स्पेशली इन द यूएस हम इसलिए नहीं एक्सपैंड कर पाते क्योंकि हम उनकी सर्टिफिकेशंस, उनकी टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेशन को नहीं मीट कर रहे होते, उनकी एक्रीडेशन को नहीं मीट कर रहे होते। सो इफ देयर इज अ नीड ऑफ सम एसेंशियल सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल एक्रीडेशन या कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं और उसको आपने अपने ग्रांट बजट में भी ऐड करते हैं। और उसके उसकी जो कॉस्ट है उसके हवाले से हमें दो एटलीस्ट आप वैलिड कोटेशन दें कि ताकि हमें प्राइस रीजनेबिलिटी का थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है। प्रपोज्ड कैपेसिटी, जैसे आपने देखा हमारा बहुत फोकस है सस्टेनेबिलिटी की तरफ, तो इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। मार्केट एंड कंपटीशन के हवाले से सिर्फ मैं एक बात करना चाहूंगा कि हमारे पास दो किस्म की ग्रांट एप्लीकेशंस आती हैं, कि जिसमें एक एप्लीकेंट कहता है कि मेरे पास यूएस की बड़ी मार्केट है और मैं वहां पे करूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं यूएस में स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया में ये वेंडर्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं और इनके साथ मैं काम करना चाहूंगा। तो देखिए, जितनी आपकी टारगेटेड अप्रोच होगी, जितनी आप नीश में जाएंगे मार्केट में, उतने आपके ज्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज उतना ज्यादा आपकी आपकी बात समझ आएगी, आपकी जो आस्क है वो समझ आएगी टू द रिव्यूअर्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पे आपने बहुत फोकस करना है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स को हिट कर रहे हैं डायरेक्टली। इसमें आपने बताना है कि नंबर्स क्या हैं ऑफ द पोटेंशियल एफडीआई एंड और रेवेन्यूज टू बी जनरेटेड विद इन 2 years ऑफ पोस्ट ग्रांट इम्प्लीमेंटेशन। हमने एक बड़ा बेसिक सा एक टेबल यहाँ पे बना दिया हुआ है। अगर आप समझते हैं कि इससे बेहतर आप अच्छा टेबल बना सकते हैं जो आपकी बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये ऑलरेडी अगर आपने कुछ ऐसा बनाया हुआ है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लोकल रेवेन्यूज और यूएस बेस्ड रेवेन्यूज बियॉन्ड 2 years
बियॉन्ड द इम्प्लीमेंटेशन 2 years के आपने हमें प्रोजेक्ट करके देने हैं, स्पेशली फॉर द यूएस पाकिस्तान ट्रेड, ठीक है जी। और एफडीआई का भी आप यहीं पे हमें बता ही रहे हैं कि जी उसके नंबर्स क्या है। फिर इसी तरह आपने रैशनल देना है कि आपका प्रॉफिट मेकिंग का मंत्रा क्या है, क्या फॉर्मूला है जिसकी बेसिस पे आप करते हैं। और मैंने पहले मेंशन किया कि कितनी फर्म्स हैं वुमेन लेड फर्म्स की जिनको आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के उसूल के मुताबिक काम करें, थोड़े से ऑर्गेनाइज हो जाएं। शायद यही वजह है कि कई सारे हमें फीडबैक मिली है फ्रॉम द वीसीज के ग्रांट्स प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं। हम ही चाहते हैं कि आप तमाम एक्टिविटीज को ब्रेक करें टास्क और उसके ऑडियंस के हिसाब से, उसकी फंड एलोकेशन के हिसाब से कि कितना आप यूएसएड के फंड को चार्ज करेंगे और कितना पीएसआई को। और 6 to 8 months की टाइमलाइन है, स्पेसिफिक टाइमलाइन को आप मेंशन कर सकते हैं और माइलस्टोन्स जो आप अचीव करेंगे, फिर यही माइलस्टोन्स आपके ग्रांट बजट के माइलस्टोन्स में जाके क्लब हो जाते हैं। एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अगर आप हमें शेयर करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन उसके उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि बहुत हैवी अटैचमेंट्स ना दें जो इरेलीवेंट होंगी। कभी कभी ईमेल्स बहुत हैवी हो जाती हैं, कोई लिंक हो गूगल ड्राइव के थ्रू, इसके थ्रू आप अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। कोई ऐसे आपका यूट्यूब का चैनल हो वो भी। चेकलिस्ट है, इसको फिल करना जरूरी है। अक्सर लोग इसको देखे बगैर सबमिट कर देते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना भूल जाते हैं, फिर वो इनएलिजिबल हो जाते हैं और हमसे थोड़े नाराज भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो चेकलिस्ट है इसको फिल करना जरूरी है। अच्छा जी, डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट है। ये एक डिक्लेरेशन है जो आपने फिल करनी है और फिर देन यू नीड टू सबमिट इट। इसके अलावा जो ग्रांट्स बजट है इसे बड़ा क्विकली बस सिर्फ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। और आई होप कि बजट भी नजर आ रहा है। इसमें यह है कि इसमें आपने ये देखना है कि जो बजट नोट्स हमने मेंशन किए हुए हैं, तो हर कॉस्ट का ब्रेकअप दें और उसके बजट नोट्स प्रॉपरली आप दें। ये देना बहुत जरूरी है कि ये आप यूं समझें, ऐसा होता नहीं है लेकिन आप यूं समझें कि आपने ग्रांट एप्लीकेशन सबमिट की और वो कहीं रास्ते में गुम हो गई और आपका बजट रिव्यू हो रहा है, तो आपका बजट पूरा आपकी पिक्चर डिपिक्ट कर रहा हो, आपकी जितनी भी बजट से रिलेटेड है, तो ये एग्री हो रहा हो आपके प्रपोजल के साथ भी। अक्सर लोगों की एमएस वर्ड पे जरा राइटिंग स्किल्स बेहतर होती हैं लेकिन एक्सेल पे नहीं होती, कि जिसकी वजह से वो अ, किसी और के हवाले कर देते हैं एक्सेल वाला काम। और फिर जब हम देखते हैं कि उसके अंदर काफी मिसमैच होता है। सेल्फ असेसमेंट फॉर्म हमारा थर्ड है, इसमें एज मच एज पॉसिबल जितना फिल कर सकें, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने साथ नहीं देनी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आपने देखा होगा सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को हम इवैल्यूएट नहीं कर रहे, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्री अवार्ड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर तब हम इसको यूटिलाइज करेंगे और आपके साथ जो सेल्फ असेसमेंट है उसकी बेसिस पे होगा। अच्छा जी, फिर ये कुछ ओरिएंटेशन सेशंस हमारे हो चुके हुए हैं। पेशावर का हमारा 30th को है, इस्लामाबाद अ, का हमारा जो है September 1 को है इवेंट। अगर उसमें आप ज्वाइन करना चाहें या किसी को रेफर करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका वही ईयूआई है। सो थैंक यू सो मच फॉर the attention. Now we will proceed towards question and answer session. I'll ask फहीम कि वो मेरी जरा सपोर्ट कर लें। फर्स्ट हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स वन बाय वन मुझे फहीम बताते रहेंगे और मैं अगर कोई मैंने बता दिए हुए हैं तो फहीम उनको एक्सप्लेन कर देंगे। एक रैपिड राउंड ऑफ क्वेश्चंस हम उसमें कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम आपके माइक्स भी अनम्यूट करके अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। हमने 1 बजे तक का टाइम रखा था, लेकिन चूंकि ये बिजली वगैरह के फ्लक्चुएशन और इंटरनेट की वजह से टाइम जरा ज्यादा गया, तो विल स्ट्रेच दिस टू 10 मिनट्स का एक आपको ग्रेस टाइम भी मिल जाएगा। अच्छा जी, जी सो फहीम, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? अच्छा जी, मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ और
अच्छा, मैंने चूंकि इसमें रिकनेक्ट हुआ था तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने रिकनेक्ट किया था कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है ना हुए, तो आई एम सॉरी, वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। जैसे मासूमा साहिबा का क्वेश्चन है, यू मेंशन्ड वी कैन ऐड ग्राफ इन्फोग्राफिक्स, देन डिड यू से लिमिट एप्लीकेशन टू इट? यस जी बिल्कुल, मैंने बताया कि आप इसको मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि दी ओवरऑल साइज ऑफ एप्लीकेशन should not exceed 8 pages, या 8, या हमने ऐसे सिर्फ लिमिटेशन नहीं रखी, लेकिन जस्ट एज अ जनरल रूल ऑफ थंब मैं ये सबको बताता हूँ कि 8 पेजेस से एक्सीड ना करें। उसमें यह है कि दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ द 3 पेजेस, तो यानी कि अगर ओवरऑल जितने भी है उसमें आप मजीद या आप 3 पेजेस को और भी लेवरेज ले सकते हैं। अच्छा जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव लिंक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ योर ईमेल एड्रेस। बिल्कुल जी, अगर आपने अभी तक आपको नहीं मिला, तो आप रिकॉर्डिंग, आप IPA फंड, फहीम टाइप कर लेते हैं, IPAfund@pakistanipa.com, just send out an email inquiry with UI on in the subject line and you will receive the link, और वो लिंक करने के बाद you will get the RFA। नेक्स्ट क्वेश्चन अमृत कुमार का है, लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीव लिंक रिकॉर्डिंग, ठीक है जी, अच्छा ये तो हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक का मुझे एक डायरेक्ट मैसेज आया है सुहेल की तरफ से। जी, एप्लीकेशन फॉर्म का कोई लिंक जो है, दैट विल बी provided to you once you submit the EOI. If you haven't submitted the EOI, just send out an email on IPAfund@pakistanipa.com. As soon as you send out, you fill in the EOI, you will get an email from IPA Fund with the link of application form. अच्छा जी, आफ्टर गेटिंग, ये मेरे पास एक और है फहीम। अच्छा, ये तो फहीम ने कुछ किया कि जी, आफ्टर गेटिंग अस grant, if our company is facing tech, raw material, labor, electric, utility, or any other political issues, can we shift our registered firm to another country in Asia with receivable grants? So your company needs to be registered in Pakistan. That will be the beneficiary. So for the overall grants programming, that need to be based in Pakistan. If you are going to move from Pakistan, so you need to give us the heads up, or because we want the funds flow into Pakistan, right? अच्छा जी, उमर जावेद चौहान साहब के सवाल है कि I understand correctly you are not going to fund new startups. We are not going to fund new experiments. But even if that's a new startup, but is engaged with a VC, is engaged with an investor, जो कि investment opportunity pretty quickly gain हो जाए with the grant, so why not? Or if the new startup has got a new connection in the US market, this US Pakistan trade हो, so then why not? Like, but it should not be the new experiment at all. अच्छा जी, if I understand correctly, you are going to fund, अच्छा ये तो हो गया। हसन साहब का क्वेश्चन है, काइंडली शेयर IPA ग्रांट एप्लीकेशन ईमेल, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। Secondly, for a company which is based in Pakistan and wants to provide services in Pakistan, तो अगर आप पाकिस्तान में बेस कर रहे हैं और आपकी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए हैं, तो आप फॉर श्योर FDI US पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड ग्रांट के लिए तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है और आप FDI रेस कर रहे हैं थ्रू द ग्रांट, एक्सपेडाइट हो जाएगा, तो फिर यस, दैट वुड मेक अ केस। अच्छा जी, बिल्कुल आपको इसकी रिकॉर्डिंग, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए। वैसे इफ यू ज्वाइन पाक लॉन्च, दैट इज वन ऑफ आवर आउटरीच पार्टनरिंग लिंक्डइन, उसमें एक वेबिनार का लिंक है, वो रिकॉर्डेड वर्जन है, वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी, वी विल गेट द रिकॉर्डिंग। इसमें डज द US पेटेंट्स फॉर रिटेल प्रोडक्ट इज, US पेटेंट्स वगैरह, सिंस वी वांट के जो द अमाउंट दैट इज
to be invested through the grant funds that needs to be materialized within the grant period. अक्सर ये होता है कि for patents you need to wait for at least 1 or 2 years. तो वो अगर आप अपने contribution से करते हैं, that would make more sense. If any organization has already spent an existing funding, जी मैंने आपको बताया कि आपके PSI जो existing है that would not be counted for जो आपकी अभी next after the performance of the grant जो आपका PSI और FDI है that would be accounted for. लेकिन आपके पुराने PSI की वजह से अगर कोई नया FDI की opportunity आई है and that would get materialized during the agreement time, so yes, that's the FDI would be considered. But again, the PSI that have already been achieved prior to the grant sign would not be considered as PSI. What do you mean by potential to leverage private sector investment? बिल्कुल लेकिन जी भी ये आया है सिंधु कुमारी साहिबा से. So what we expect कि देखें you need to mobilize your equity, you need to get third party investments combined with the US fund to give you a certain scale कि जिसकी वजह से आपकी FDI जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है वो एक्सपर्टाइट हो जाए. So that's the connection. अच्छा फिर question from Musa, I guess, वो है कि does a US based patent, अच्छा ये तो हो गया. Sir, you discussed $25,000 amount. अच्छा vetting जी बिल्कुल. So for vetting, we are supposed to do so any grant amount that goes beyond 25,000 US dollar. So since it's a 2 crore of funds, right, for per grant, तो we expect कि हर grantee की एक vetting होगी. तो आपकी जो key information है that you provide us in your grant application that goes to USAID और वो आपकी vetting करते हैं, that once cleared, then we'll be able to award you. Why FDI related questions marking for US? अच्छा जी बिल्कुल ये. So what we have seen के there are cases where when you do business with US counterparts, they're interested in scale. And in order, because if they like your merchandise, you have got the competitive edge and you are making business sense to them, तो वो अक्सर invest भी करते हैं. So since this trade and FDI go at times hand to hand, so इस वजह से we have kept some of the marks on the FDI. Whereas US-Pakistan grant fund can be utilized outside of Pakistan as well, likewise within the US or expanding the. जी बिल्कुल US-Pakistan bilateral trade should be focused within the US markets only. आप US-Pakistan trade grants को किसी और कंट्री के मार्केट में नहीं यूज कर सकते. और likewise अगर आप इसके थ्रू पाकिस्तानी मार्केट्स ओपन करते हैं for the US, वो भी आप कर सकते हैं. I see there is not enough space for answers completely. जी जी बिल्कुल वो तो हमने एक लाइन के जो हमने मेंशन किया है वो तो एक जस्ट एज इलस्ट्रेटिव किस्म की स्पेस है. आप उसके अंदर मजीद स्पेस न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं, इसीलिए ये एडिटेबल फॉर्मेट में है. The legal registered startup can apply for this grant. Yes, they can. Is healthcare included in priority list? I have shared के हमने 4 priority sectors तो बताए हैं, लेकिन we are pretty much open for any other sector that could either have the FDI or US Pakistan trade. Haris Ahmed साहब पूछते हैं कि my startup is running since the last year, but I am not planning to connect with a VC in next 6 months or 1 year. I get to reasonable size. I won't be able to give evidence for FDI correspondence. Should I consider myself as ineligible? Yes, I think for this solicitation, you need to work on the growth strategy. If I were you, I would do that. कि मैं अपने ग्रोथ स्ट्रेटेजी को मुझे पता है कि 6 मंथ तक मैं किसी VC से बात नहीं कर रहा, मैं एक स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ. Probably you can seek for some other funds कि जो कि सीड फंडिंग टाइप की हो, और फिर नेक्स्ट ईयर व्हेन वी
ask for application for the next round, हो सकता है कि उसके लिए you are fully ripe to do that. आदिल पूछ रहे हैं कि in case of successful candidates who is buying some machinery from international market, is there possibility that funds can be paid to my client on my behalf in any other country, just bypass? नहीं नहीं, ऐसा ये नहीं है. You will be the recipient of the funds और आपने ही वो legal channels of transactions को बनाना है और उसी को आपने manage करना है. Kumar साहब का again आया, if our firm is registered at FBR, not going to SCCP, yes, that's fine. Assalamu alaikum, sir. I am running clothing business from 1.5 years. I have settled a room shop and also a page. I'm eligible for the grant as long as you can convince the reviewer कि आपका US पाकिस्तान bilateral trade का कोई ना कोई linkage है. अमृत कुमार साहब, आपके तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस का रिस्पांस कर दिया है. अभी आपका क्वेश्चन मार्क मैंने देखा है. खुशनूर है, the terms and conditions are same as for rural areas and Gilgit-Baltistan. Yes, this is all for this. This is applicable for all. और GB के लिए जो वहाँ की जो legal firms हैं, and they would be considered as a legal firm. Can we get contact person number of USAID to help us if you face any issues? You have got this email address, ipffund@pakistanipa.com. This is the only source of contact that you have right now. Achaji, if we secure credit for certain period from the US-based investors in terms of supply of machine, will it be considered? Credit, I'm not sure if I get your question correctly. लेकिन अगर आप कोई US based investor, if we secure credit for certain period from US based investor in terms of supply of machinery, नहीं ये FDI नहीं होगा जी. ये तो एक आपकी transaction कुछ आप reason off करें. This will not be considered as FDI. I have NTN and bank account in under process. The under process will not be considered. What should be the age of applicant? We have not mentioned the age. ये तो हमने काफी relax रखा हुआ है. This is Mudassir, CEO of MIA Group. Currently, we need around 30 million USD collectively, 6 major cities. Airline, cargo, अच्छा ठीक है जी. If I take only that, minimum 2 million USD question, am I eligible? जी बिल्कुल, yes, sure you are. Am I already floated in market and alone? Yes, आप बता सकते हैं कि आप PSI के लिए काम कर रहे हैं. We have major paid up capital. It will help if you don't have concrete buyers. बिल्कुल ठीक है जी. Can grant eligible for incidenting of local tenders, for indenting the local tenders. No जी, ये इसके लिए नहीं हो सकता. And many other questions need to ask. Kindly let us know the point of contact. I will ask you to write all of your questions on email, send it those through, and we will respond it to you. On IPF fund, is there any concerned person in Gilgit-Baltistan to help us EY form facing internet issues? नहीं जी, ये ऑनलाइन फॉर्म ही है, कोई ऐसा कोई पेपर बेस्ड या कोई वो नहीं है. Thank you, Amrit Saab. Or will you explain about the milestones a bit more? Yes, sure, I can. So, for instance, कि अगर आपके पास multiple activities, आप एक activity से उसको आप break करते हैं. अगर मैं एक सादा मिसाल में बताऊं तो फर्ज करें कोई IT से related है, आप एक grant application आपने बनानी है, तो वो application बन जाएगी, उसका link would be one deliverable. So this is launched. So launch of that application would carry some of the budget allocation, right? आपने कोई machine ली है, तो वो जो machine आपकी है, when that machine is being secured, जब वो machine आ जाए और that is being commissioned as well, so that will be considered as a milestone completion. हमारे वहाँ पे engineer जाएंगे और machine की completion और उसकी certification और वो करेंगे कि that is in running condition. So these are all the questions that I have addressed. फहीम, हम कुछ questions ले लेते हैं जिन लोगों ने hand raise किए हुए हैं.
हमारे पास 1:15 तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, फिर ये सेशन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जी मोहम्मद उवैस, आप प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिएगा। Thank you, Yusuf, for organizing this seminar. I have a quick question, and I asked this on this chat as well, but I was unable to understand. Question ये है कि हम लोग जो grant हमें मिलेगी, can we utilize those funds in the US, like enhancing our capacity, maybe hiring some people who can work for us from the US, ताकि हम bilateral trade को थोड़ा सा push कर सकें? Can we do that through this aid? Yes, you can do that. Next question. मोहम्मद मुदस्सिर, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। मोहम्मद मुदस्सिर। Assalamu alaikum. Walaikum salam. This is Muhammad Mudassir. I just already asked you regarding for some questions Okay. Related to air cargo and airline projects. Alright. Last year we have some good contract with the local airline, and we have just made a contract for supply of some aircrafts. Okay, and we made a contract with the island company for a supply of an aircraft. Okay, but they need some kind of a concrete backup, and as well as the guarantees from the local guarantees. Okay, we already provided. Now the contract is just to be expired. We are going to resume this contract again. So is this possible that you can just the company can validate or can consider this kind of a contract as a valid customer or valid business? So this actually depends on you, how you convince the reviewer within the application. So if you are doing a FDI grant or a US-Pakistan bilateral trade grant, so I leave this creativity with you. How would you convince that? Since it is your business performance, right? तो आप बिल्कुल क्यों नहीं इसको account for करेंगे as your लेकिन ऐसा हो सकता है, I'm really sorry for interrupt, ऐसा हो सकता है कि जस्ट वो उसको कंसीडर कर दिया जाए कि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना हुआ है और उसको हम जो है वो दोबारा से रिज्यूम करेंगे, लेकिन आफ्टर योर ग्रांट, कि अगर आपको आपकी तरफ से कोई ग्रांट मिलता है तो देन वी विल रिज्यूम दिस प्रोजेक्ट। ठीक है जी। और उसमें ये है कि वो हमें अपने एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रहे हैं एंड देन वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द लोकल कंपनीज। ठीक है, I hear you जी, I hear you। उसमें यह है कि मैं बिल्कुल, मुझे सारी समझ आ गई। Just to because we are running through time, if I were you, तो मैं शायद ये चाहूंगा कि मैं उनको अपने इन्वेस्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनको भी, और मैं अपनी एप्लीकेशन में भी ये मेंशन करूंगा कि मुझे अगर ये ग्रांट मिलती है तो दिस इज $multi-billion contract that I will be able to win, right? It will expedite my process और growth. So बिल्कुल आप इसको ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं जी। शुजात अली, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुजात अली प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिएगा माइक अनम्यूट करके। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने दिसंबर 2021 में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है पाकिस्तान में। SCCP में भी PRA, FBR, PEC मतलब सब रजिस्ट्रेशन मेरी कंप्लीट है। तो इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस था सऊदी अरब का तकरीबन 10 साल का MEP वर्क में। तो ये काम मैंने स्टार्ट किया इधर कोयटा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का तकरीबन सबसे बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल आपका क्वेश्चन क्या है जी? अगर आप अपने क्वेश्चन पे आ जाए तो किसी और का टाइम बच जाएगा। सर मैं प्लीज सर बहुत मुख्तसर करता हूँ सर। मैं इस शॉपिंग मॉल पे जो MEP वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें मैंने जो वर्कशॉप अरेंज की है वो मेरे पास 3 to 4 मिलियन की है। तो मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऑटो वर्कशॉप अच्छे लेवल की जिसमें मेरी प्रोग्रेस भी और क्वालिटी भी और बेहतर हो जाए, तो इसके लिए मैं क्वालिफाई कर सकता हूं? जी, चूंकि देखिए हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं। आपका तो काम बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हैं, या हमने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। आप मतलब आपके काम के साथ एकदम इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपके काम में आ जाए, या अमेरिका के साथ आप बिजनेस करने की हैसियत आपकी हो जाए कि आप किसी अमेरिकी कंपनी को बिजनेस सेल कर रहे हो। अगर ये 2 एंगल्स नहीं है, फिर आप इस ग्रांट अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। जी आदिल राशिद साहब अपना क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। आदिल राशिद। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर ऑल द डिटेल्स जो आपने बताई हैं। बहुत जल्दी मैं आपसे सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ये करना चाहूँगा। आई एम डूइंग अ फेरिंग बिजनेस। हम प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान में फेरी लाने के लिए, एंड वी हैव शॉर्टलिस्टेड अ फेरी फ्रॉम अमेरिका,
और उसकी कॉस्ट जो है तकरीबन वो समझ लें कि 400,000 USD है। अच्छा, उसका 50% हम पे कर रहे हैं और 50% के लिए हमने उनको बाद में पे करना है, जैसे हम यहाँ से अर्न करेंगे। तो कैन वी यूज दिस फंड फॉर द पेमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, और मे बी कि अगर हम चार्टर करके भी ले आते हैं और हमें परचेज इसको करना है तो हम वहाँ पे इसको यूज कर सकें। मोटराइज्ड इक्विपमेंट जितने भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो दैट नीड्स टू बी ऑन योर कंट्रीब्यूशन, लेकिन उसको बाकी उसके अंदर उससे रिलेटेड कोई इक्विपमेंट्स हैं जो उसको फिक्स करने के लिए हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको जो कि बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक हमारी सक्सेस स्टोरी भी है। चैलेंज फंड के थ्रू हमने ओशियानिक क्रूज के नाम से एक हमारे ग्रांटी हैं जिन्होंने एक क्रूज बनाई कराची में, तो शायद आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन यह है कि ये जो बोट है, ये जो शिप है, कैरियर है, उसको आप ग्रांट फंड में नहीं, लेकिन और चीजों को आप ऐड कर सकते हैं जरूर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, लास्ट कोई है क्वेश्चन next question? है नदीम पाशा की तरफ जी। से। जी नदीम, अपना जी। क्वेश्चन कीजिएगा। आपके माइक। पास 2 मिनट्स है नदीम। जी, दो एक्चुअली मेरे, एक तो ये कि हम एक B2B प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप हमने डेवलप किया है विद सम बेसिक फीचर्स। अब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम इस एड को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम इसको फिर फुल फ्लैज और बड़े स्केल के ऊपर इसको हम लॉन्च करें, उसके लिए हम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हायर करें, चाहे वो ह्यूमन जी, कर रिसोर्स हो सकते हैं। या अदर। ओके, जी, कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दोनों ऑब्जेक्टिव्स में से कुछ मीट हो रहा हो, या FDI आ रहा हो, या US पाकिस्तान ट्रेड हो रही हो। Okay. My second question is quickly that from item number 30 to 40. All right. All right, Jay. So thank you so much. Thank you for your time. And we look forward to receive really good application. If you have still got questions, feel free to ask them through the email address, that is ipafund@pakistanipa.com. I really appreciate your attention for this session. Thank you. Allah Hafiz.